Karnaugh Map or K Map. K Map is a visual grid method used to simplify Boolean algebra expressions without doing long math. So means K maps are used to solve the Boolean algebra expressions or equations by using the visual method, visual grid method. So how to make two variable K map? Let's see. We will make two variable K map. For this, for two variables, we write A here and B here. So these are the two variables. Value of A can be 0 or 1. Similarly, value of B can be 0 or 1. So here in this box, we will write the term as 0 0, then this as 0 1, then this as 1 0, and this as 1 1. So in this way we can write the different elements, or we can fill the different elements in this box. And if we make 3 variable map, so for that we draw a 3 variable map. So it will be, in case of 3 variable, we need 8 boxes. So that's why we will take 2 on one side and 4 on one side. We will write A here and B, C here. The value of A can be either 0 or 1, and value of BC can be 0 0, 0 1, then 1 0. Don't put 1 0 here, put 1 0 here, and then 1 1. So this is a you can say we have to write like this कि हमने पहले 0 0 लिखा, फिर 0 1, फिर थर्ड टर्म बनती तो 1 0 है, लेकिन वी डोंट राइट 1 0 हेयर, ऐसे नहीं लिखते, हम 1 0 यहाँ पे लिखेंगे और फिर 1 1 यहाँ पे लिखेंगे. रीज़न है कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे जाते हैं तो सिर्फ एक बिट चेंज होनी चाहिए, 2 बिट्स नहीं चेंज होनी चाहिए. तो जैसे यहाँ से 0 थी, 0 रही फर्स्ट बिट, दूसरी बिट 0 से 1 होगी. अगर हम इससे आगे ये आएंगे, ये 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, दोनों बिट चेंज हो रही है. सो दैट्स वाई वी कांट राइट. सो हियर सी 0 से 1 हो रही है ये बिट, और दिस बिट सेकंड इज 1 से 1, ये चेंज नहीं हो रही. और आगे देखते हैं 1 से 1 रह रही है और 1 से 0 हो रही है. सो हर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे जा रही है तो एक बिट की चेंज हो रही है, 1 बिट चेंज, 1 बिट चेंज, 1 बिट चेंज. सो दैट्स वाई वी राइट इट लाइक दिस. सो अगर इसकी टर्म्स लिखनी हो हमें तो वो लिखेंगे 0 0 0, 0 0 0, then 0 0 1, this is 0 0 1, this is 0 1 1, 0 1 1, and this is 0 1 0. So यहाँ पे 1 0 0, 1 0 0, then 1 0 1, पहले ये वाली लिखते हैं हम, 1 1 1, then 1 1 0. So this is the way to write terms. और इनको also आप m में भी डिनोट कर सकते हैं. दिस इज़ द m0, दिस इज़ m1, दिस इज़ m2, and this is m3, this is m4, m5, m6, and m7. So same rule is applied here, because we are filling this box first and then this. So m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, and m7. So this is the way to make 3 variable K map. So let's move to next 4 variable K map. So in 4 variable K map, we need 16 boxes, 16, 4 on this side and 4 on the other side. Take 4 variables A, B, then C and D. The value of A, B can be 0 0,
0 1, then 1 0 here and 1 1, 0 0, 0 1, 1 0 and then 1 1. So all these boxes can be filled. This is for M0, M1, M2 and M3, M4, M5, M6, M7. This is M8, M9, M10, M10 and this is M10, this is M11. So M12, M13, M14 and M15. This is the way to fill these values. So if we are using minterms, then we write small m, and if I using maxterm, then we write capital M. So this is a 4 variable K map. In this way we can make 1 variable, 2 variable, 3 variable or 4 variable K map. Thank you.